So guys, here we go with the definitions as well as adsorption and absorption's differentiation. So see, as in previous classes, I tried to tell you the difference between adsorption and the absorption, but here I will tell you the difference between adsorption and absorption point wise, and again with very interesting examples which you are using in your day-to-day life, by through which you can know or you can differentiate between absorption and the adsorption. But before going towards the point, you must have to know one thing which is related with simply our adsorption and the absorption. That is, absorption is nothing but the process in which it is takes place. It takes up another substance through minute pores or the spaces between them. What does it mean? It means, देखिए, absorption होने के लिए partitioning जब होती है, एब्सॉर्प्शन जब होता है, तब आपके जो कुछ भी फेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, यू कैन कॉज दैट इज फेज 1 एंड फेज 2, जैसे कि हमने कंटेनर के जैसे बोला था वैसे ही। तो एक फेज है, ये दूसरी फेज है। इस दूसरी फेज में ये जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स थ्रू द पोर्स और थ्रू द स्पेसेस वो एंटर करते हैं बल्क में आपके दूसरी फेज में। इसी को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, जब वो कंप्लीटली चले जाते हैं आपके दूसरी फेज में, या फिर हम बोल सकते हैं एट द व्हेन दे टेक्स अप, मतलब कि व्हेन दे एंटर्स इनटू द minute pore, when they enters into the another substance through the minute pores or the spaces, मतलब कि यहाँ पे छोटे 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 pores या फिर spaces होते हैं जिनमें से कि आपके phase 1 के molecules phase 2 में easily enter कर सकते हैं, bulk में enter कर सकते हैं। इसी को हम बोलेंगे absorption, which is also helpful, or which can be also involving a volume of material, which will be involving whole volume of material, मतलब कि सारा का सारा जो कुछ भी मटेरियल है होगा वॉल्यूम का, वो इन्वॉल्व करेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम एड्सॉर्प्शन की। तो आज के स्लाइड्स में हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर 1 minute, because after 1 to 2 minutes we are going to learn, or we are going to view simply the day-to-day lives examples of adsorption and absorption. Whenever you are going towards that examples, means whenever that examples will came into your use every day, at that time you will realize that, oh, this was absorption, oh, this was adsorption, and at that time you will recall what Gaukar madam, because that examples means, just do not learn for the sake of completion of syllabus. Learn for interest. Learn to create your interest in your chemistry, in your science, so that you can become scientist of tomorrow's. Because if you are clear with the concepts, then only you can apply them in your day-to-day life, and also then you can research, you can simply try to find out the new things in your life, in your science, and most probably they should be and they will be helpful to our society, our nature. And likewise, you can become surely scientist of our tomorrow's India, tomorrow's world actually. So see, when this adsorption is here at that time, this is nothing but the process where there is nothing but the addition of atoms, where there is nothing but the addition of atoms. Listen very carefully. Addition means
just only the forces of attractions between your atoms, ions, or molecules from a gaseous or liquid or dissolved solid to surface. मतलब क्या? Adsorption is nothing but the surface phenomena, मैंने जैसे कि आपको बोला था पहले भी. देखिए, आइए अब यहाँ पे ये देखिए फेज 1 है और यहाँ पर फेज 2 है एक्चुअली. तो फेज 2 में ये जो बाउंड्री लाइन, ये जो देखिए अच्छे से मैं जो आप लोगों को वीडियो 2 में बताना चाह रही थी बाउंड्री, जो कि मैंने हाथ से ड्रॉ करके बताया था आपको, तो वही अब डायग्रामेटिकली यहाँ पे है अच्छे से. दैट इज वॉट एवर दिस वन, your phase 2 is there, this phase 2's surface is here, and your phase 1's molecules are going to get added onto the phase 2's surface. That is nothing but the upper phase or upper layer, you can say. And this process is known as adsorption, and it involves only and only surface area of the material. What it does, it just only involves simply your surface area of material, simply surface area of your material, nothing different than that. Means ये molecules, अब आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहे थे, अभी ये जस्ट मॉलिक्यूल्स दिखाने के लिए बोला है, बट आप लोग मुझे बोलो अगर एडसॉर्प्शन हो रहा है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं क्या? उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं. उसका आंसर क्या है? बिल्कुल भी नहीं. क्यों नहीं आते वहां के मॉलिक्यूल्स? क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो रही है? एडसॉर्प्शन. कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? एडसॉर्प्शन. आई थिंक you must be clear with the adsorption and absorption very clearly with these diagrams. If not, then don't worry, because I'm here, then you should not fear. Just let me change the slide to tell you some of the examples. Oh, my slide is not changing. Yeah. Now, here is the slide, and now everybody will be laughing. Everybody will be knowing that, oh, wow, it was absorption. Oh, wow, is this one is the absorption? Yes, you are absolutely correct. Why? Because when you have this your adsorption and absorption phenomena. Which phenomena? Adsorption and the absorption phenomena. At that time, what is mean by adsorption? देखिए, हम जब घरों को पेंट करते हैं तब क्या होता है? एडसॉर्प्शन होता है. अगर से समझ लो आप पेंट कर रहे थे आप लोग और वो पेंट चला गया दीवारों के अंदर, तो कोई फायदा होगा क्या एडसॉर्प्शन का? मतलब कोई कलर दे के कुछ फायदा होगा क्या? इसीलिए एडसॉर्प्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना. इज इट और नॉट? यस, एब्सोल्युटली. एडसॉर्प्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फेनोमेना. व्हाई? बिकॉज अगर हम दीवारों को पेंट करते हैं और वो पेंट अगर से दीवारों के बीच में चला जाए तो कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. अगर से फायदा होना चाहते हो आप लोग, तो वहां पर एडसॉर्प्शन प्रोसेस ही होनी चाहिए. एंड सिंपली ये जो कुछ भी पेंट होते हैं आपके, ये सारे के सारे पेंट एडसॉर्प्शन फिनोमेना represent करते हैं. Okay, and now you will be amazed with the absorption. You will not be amazed actually, because absorption knows everybody knows very well with the absorption. How's that? See, whenever you are having, you can consider this is as cloth, or this is as simply what we can say, that is as cotton or cloth. Okay, onto the cotton or cloth you're adding some of the jelly material, sticky material, or simply the water. Then surely you will call, or you can say me, yes ma'am, now we are very well knownly understood with the absorption, or previously we were understood, but with this we are very clear with the absorption. Right, guys? Now, I think you must be happy with these slides. Why? Because I'm telling you, because अब आपको यहाँ पर डे टू डे लाइफ में
कैसे एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि अब देखिए, कॉटन हो या फिर कपड़ा हो, कपड़ा या फिर कॉटन में आपका जो कुछ भी, आप समझ लीजिए वाटर डाल रहे हो, तो वो वाटर सॉरी, वो वाटर कंप्लीटली एब्सॉर्ब होगा या नहीं? यस, वो कंप्लीटली अंदर जा करके बल्क में बैठ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। ओके गाइस, लेट मी चेंज द स्लाइड। What happened? Okay, guys, with this, we are here with our next one slide. As I told you in first and very second and class of our adsorb uh, surface chemistry, and in that I tried to elaborate the term um, adsorbate and adsorbent. But don't worry again, because here I have different examples, different one slide, and to explain you adsorbate and bend. And also, if you are not clear with the present one slide again, then don't worry. After this slide, there is one of the very interesting one slide just to clarify your adsorbate and adsorbent phenomena. But before that, try to just what we can say, remind that, can you recall what is mean by adsorbate and what is mean by adsorbent? Yes. No, I can't ask you because this is recording. So you just answer yourself and then tell me. Okay, so what is this? This is nothing but the adsorbate. This is nothing but what? This is nothing but what? Your adsorbate. And now, whenever we have adsorbate and the adsorbent molecules, at that time, simply you know very well whatever this adsorbent is there, at that time, this adsorbate is nothing but the substance that gets adsorbed onto the surface. मतलब क्या? जो ऐड होने वाला है वो। तो अब आइए इस डायग्राम में बताती हूँ। एडसॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, मतलब एडसॉर्प्टिव, मतलब कि जो भी एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है वो ऐड होने जा रहे हैं एडसॉर्बेंट पे। देखिए यहाँ पर जिन मॉलिक्यूल्स पे आपके ये मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऐड होने जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जिन पर ऐड होते हैं उनको बोलते हैं बेंड, एंड जो ऐड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एडसॉर्बेट। जो ऐड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट। Simply, the substance on this on the surface of which adsorption takes place is known as adsorbent, and on which is added is known as adsorbent. So, for example, if gas is adsorbed, for example, if these molecules you can consider like, if gas is adsorbed onto the surface of solid, for example, then it is termed as adsorbate, and the solid is termed as adsorbent. मतलब क्या? यहाँ पर आप अगर से एड्सॉर्प्शन होने वाला है, किस पर होने वाला है? सॉलिड के सरफेस पे गैसेस ऐड होने वाली है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट सॉलिड इज टर्म्ड एज, ये सॉलिडच्या सरफेस वरती गॅसेस ऍड होणार, इस सॉलिड के सरफेस पे गॅसेस ऐड होने वाले, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्चुअली एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। बट जिन पर ऐड होने वाले उनको बोलते हैं हम एड्सॉर्बेंट, एंड जो ऐड होते हैं उनको बोलते हैं हम एडसॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट। आई थिंक यू आर मच clear with the adsorbate and pen again. But again, if you are not clear, then don't worry and you need not to fear, because I am here to show you the next one exam. That is
it is here. Now you will be happy with the present one example, and might be there will be craving to drink tea with biscuits, right? So isn't it very interesting example? Why? Because whatever you are, these adsorbent are there. मुझे बोलो अब बेंट कौन होगा और बेट कौन होगा? देखिए अच्छे से सुनिए, ये जो कुछ भी अब मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स, अब आप उल्टा मत सोचो, यहाँ पे देखिए जो कुछ भी मॉलिक्यूल ऐड होने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो मॉलिक्यूल्स ऐड होने जाते हैं उनको हम बोलते हैं एडसॉर्बेट। एंड जो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, मतलब जिन पर ऐड होते हैं, जिन पर अनदर सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, उनको बोलते हैं हम एडसॉर्बेंट। उनको क्या बोलते हैं हम? एडसॉर्बेंट। सो देखिए, या सो एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। आप बोलोगे, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को कि मैम हम चाय में बिस्किट डुबोते हैं तो एडसॉर्बेंट बिस्किट होना चाहिए और एडसॉर्बेंट हमारा चाय होना चाहिए। ना बेटा, क्यों? क्योंकि एडसॉर्बेंट मतलब क्या होता है? जिस पर ऐड होते हैं, चाय जा रही है आपके बिस्किट के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नथिंग बट द एडसॉर्बेंट। अब आप लोग बोलोगे मैम चाय तो बिस्किट के अंदर सक होती है, बट आप अगर से उसको जस्ट डिप करो तो वो अंदर पूरी की पूरी चली जाएगी क्या? नहीं। For the sake of convenience, for the sake of understanding, I am telling you all these examples. Okay. एंड देन आफ्टर, अच्छे से देखो और एक बार बोलती हूँ मैं, बिस्किट हम डुबो रहे हैं चाय में, पर आप इसको ऐसे उल्टे तरीके से मत लीजिए कि बिस्किट डूब रहा है चाय में, मतलब ये लेयर हो गया और ये आपका जो कुछ भी बिस्किट होगा वो एडसॉर्बेट होगा और ये बेंट होगा। You will be absolutely wrong. Bent is what जिस पर ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि बिस्किट के लेयर के ऊपर चाय जा करके ऐड हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नथिंग बट, with my opinion, this is the best example of adsorbate and adsorbent. I don't know about you, because and just let me know in my Google Classroom with your replies. Actually, would you like these examples or not? Okay, just I will be very happy that in today's class, whatever the examples I have told you, that examples you like or not, so that I can introduce the examples in our next classes. So again, very interesting one example is here. I think this one, at least example, you will be laughing with this example, and you must be getting interacted with my class, and you must be getting stuck with my class, and you will be happily enjoying our surface chemistry classes. So see, एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन में अब हम जा रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, ये चलते चलते जा रहे थे, ये महाशय चलते चलते जा रहे थे और इनके मुंह के ऊपर अगर से समझ लीजिए कुछ केक वगैरह फेंक दिया, तो वहां पर एब्सॉर्प्शन हो गया। एब्सॉर्प्शन होगा, बोलो मुझे, फेस पे जाकर के जस्ट गिर गया है, फेस में नहीं गया है, पूरा का पूरा बॉडी में गया क्या? नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन? Adsorption, obviously. Isn't it very humorous? Yeah, absolutely it is. And now absorption is there. Now in absorption phenomena, when you have see this man is trying to eat something, and now he's taking completely with he's trying to take it, that one dish in his mouth. It means this is nothing but the best example of our absorption. Okay, guys, let me go to the actual part of our, wait, yeah, now यहाँ तक तो मतलब हंसी हो गई, मजाक हो गया, पॉइंट्स भी सीख लिए। अब चलते हैं एक्चुअल हमारी एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन के डिफरेंशिएशन की तरफ।
ओके। सो अब आप लोग मुझे बोलोगे, मुझे बोलोगे मतलब इस वीडियो को पॉज करो और मुझे बोलो कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में। देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, और दैट पॉइंट इज नथिंग बट द फेनोमेना। एब्सॉर्प्शन कैसा फेनोमेना होता है? सरफेस फेनोमेना होता है, वेयर एज एब्सॉर्प्शन बल्क फेनोमेना। हीट एक्सचेंज कैसी होती है यहाँ पर? एक्सोथर्मिक हीट एक्सोथर्मिक मतलब कि एब्सॉर्प्शन जिस लेयर पर होता है, मतलब एक लेयर है आपका, समझ लीजिए। ओके, तो वो जो कुछ भी लेयर है, वो जो कुछ भी लेयर है, वो लेयर, वेट मिनट, वो जो कुछ भी लेयर है उस लेयर पर एडिशन होती है, और ऐसे एडिशन के बाद में ऑब्वियसली देयर विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट जब एब्सॉर्प्शन होता है तो एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, अंदर जाकर के बैठते हैं। मतलब क्या, इट माइट बी इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब वहां पर हीट देनी पड़ सकती है। अब टेम्परेचर, सो इट इज फेवर्ड बाय द लो टेम्परेचर, मतलब क्या एब्सॉर्प्शन में जस्ट आपको ना एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हो आप, तो वहां पर मतलब एज सच कुछ ज्यादा, या फिर हम बोलेंगे कि कुछ ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा, कम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन चल जाएगी। बट जहां पर आप एब्सॉर्प्शन करा रहे हो वहां पर कुछ भी टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी, या फिर हम बोल सकते हैं it will not be affected by any temperature. Is it I think our meeting time is over. Mm, let me check. Yeah, we can. Yes. Where we were on this. It is steadily increases and reaches equilibrium. Rate of reaction. It occurs at uniform rate. It occurs at the uniform rate. Wait a minute, guys. Yeah. Yes. Everything is fine. It is steadily increased and reaches equilibrium, मतलब कि इक्विलिब्रियम में ये प्रोसेस आती है। कंसंट्रेशन, अब देखिए ये जो कुछ भी प्रोसेस होगी इस प्रोसेस में एडसॉर्बेंट एंड, ये जो कुछ भी, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप आफ्टर दिस पॉइंट बिकॉज मीटिंग टाइम इज गेटिंग ओवर। वी विल continue in next class, but after just concentration point. Concentration on the surface of adsorbent is different from that in bulk, whereas it is same throughout the material. Let me check the slide. Yes, um, these are nothing but the processes and all. Yes, all these things we will be learning in our next class. Yes. Okay, guys. Thank you so much for listening me, and let me know how you're feeling about my these recorded sessions. I would like to listen your good comments as well as bad comments, as well as your uh, if you have any if you need any improvements from my side, then let me know in my Google Classroom. Thank you so much, everyone.